निष्ट विश्वविद्यालय प्रथम समावर्तन उत्सव पालन ब्रह्मपुर गोलंथरा स्थित निष्ट विश्वविद्यालय प्रथम समावर्तन समारोह आज अनुष्ठित हो जाए। विश्वविद्यालय 10 जन छात्र छात्री को स्वर्ण पदक, 19 जन छात्र छात्री को रौप्य पदक सहित समुदाय 127 जन छात्र छात्री को डिग्री प्रदान करा नाल्को सीएमडी श्री विजेंद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि भाव जोगदे। सुनामधन्य ओडिसी डांसर तथा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर अरुणा महांती सम्मानित अतिथि भाव जोगदे। निष्ट विश्वविद्यालय प्रतिष्ठाता तथा सभापति डॉक्टर सुकांत के महापात्र छात्र छात्री मानक उत्साहित करने सह उभय जातीय एवं अंतर्जातीय स्तर में विभिन्न दक्षता प्रतियोगिता से सफलता उपरे विवरणी प्रदान करते। भविष्य में छात्र छात्री मानक विकास पर विश्वविद्यालय परिसर में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस प्रतिष्ठा करने को आलोचना सहित स्वाक्षर करा सूचना दी। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रियदर्शन पात्र वार्षिक विवरणी पाठ करते। उत्सव में विश्वविद्यालय बोर्ड ऑफ गवर्निंग मेंबर चिकिटी विधायक श्री मनोरंजन ज्ञान सामंतराय, डॉक्टर प्रतोष बंसल, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, श्री विमल मिश्र, श्री रंजन जेना प्रमुख जोग देते। रजिस्ट्रार डॉक्टर विष्णुकर नायक धन्यवाद अर्पण करते। यही कार्यक्रम को डॉक्टर मानस रंजन पात्र, प्रोफेसर स्वाधीन मिश्र, डॉक्टर प्रीतिरंजन साहू, डॉक्टर सस्मिता पाढ़ी, डॉक्टर रतिकांत नायक, डॉक्टर मानवेंद्र पात्र, डॉक्टर लक्ष्मीकांत राजू, श्री सरोज पाढ़ी, डॉक्टर भवानी शंकर गौड़, प्रभुदत्त मिश्र, प्रोफेसर सरोज पाढ़ी, प्रोफेसर पुण्येन्दु मिश्र, संतोष कुमार नायक, वासुदेव पाढ़ी, गोपबंधु उत्तर कवाट, सुनील राय और पीताम्बर साहू प्रमुख परिचालना करते। यही अवसर में विशिष्ट महाकाश विज्ञानी तथा पद्मश्री डॉक्टर कोटा हरिनारायण विज्ञान में सम्मानपूर्वक डॉक्टरेट डिग्री हासिल करथिबा बेले विशिष्ट ओडिया कंठशिल्पी श्रीमती नमिता अग्रवाल को साहित्य में सम्मानजनक डॉक्टरेट डिग्री प्रदान करा जायथिला। ब्रह्मपुर सुनील विश्वासंक रिपोर्ट कांतिधारा प्लस। My compliments to NSIT for their first convocation, and this is a very good institute. As already we all know, this is the graduating students passing out, and most of the students are placed. Around 23 lakhs is the highest package, and around 5 to 6 lakhs is the average package. Lot of opportunity for the students here, and the kind of faculty members, the quality of faculty members, the quality of administration here. It's a nice opportunity for the students who are graduating here to go in the outside world, whatever they have learned here. Indian economy, as I've already told in my speech, is the fastest growing economy. It is growing at the rate of 6 to 7%. If you see world, any other country, it's going, even China is growing at the rate of 3 to 4%. Next 3 years, India is going to be the third largest economy, and by 2047 to become the developed nation. So India is growing economy, lot of the thrust on infrastructure development, core industries, you see steel, aluminium, coal, power, all the industries will grow in the coming days because government is putting lot of investment in infrastructure development, science and technology, urban cities. All these investments are going to create industries and create lot of job opportunities for the young people. Main advice to the youth is there will be lot of opportunities to make themselves more and more skillful, more and more resilient, and they should see that they are more and more physically fit, competitive to take care of the competitive world. Thank you, sir. बरमपुर रही हम बरमपुर लोक आम पढ़ापढ़ी सब ये सो आई फेल्ट हैप्पी टू बी हियर एंड आजिकल रिसेंटली वार है डिफेंस प्रिपेयरनेस आमर जाना पड़ा आई एम हैप्पी दैट व्हाट आवर प्रोडक्ट्स दैट वर डेवलप्ड इन इंडिया देयर शुड बी प्रेशर ऑफ द वार आगे टेस्ट कर बट टेस्ट इन एक्चुअल वार इज अ रियल टेस्ट सो आई फील दैट एज अ कंट्री वी आर नाउ come to next level not only in economy but also in defense preparedness and in aerospace and ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି as a team ଆମେ କାମ କରୁଛୁ space all the armed forces DRDO and general everybody सब मिलकर they have done this अब जहाँ
air defense system jaha tiyar hela, it is what you call layers quantity, from something like 20 kilometers to something 300 kilometers, and worked very well. So it shows that ame economy re बढ़ुचु, our technology re बढ़ुचु, our defense preparedness re bhi बढ़ुचु. I am looking forward to India rising to by 2030. It will be counted among the top 5 superpowers in the world. Okay? Tejas is a small aircraft. They have used it as an air defense aircraft, and I think it has done well. So they don't want to talk much. Ambi koi par, Okay. Of NIST University, and as we move forward, though it is started in 1996, we become a university in 2024. So this is the first convocation, the graduating student getting a degree directly from the university itself. But we still have that legacy to continue. The legacy one is the student first. We always make sure our student excel in academic, excel in research, become good human being beyond the certificate, beyond the transcript. Number two, we're very much into research. We're doing a lot of applied research, which will not only change the kind of a creativity of the student, but it will change the fundamental paradigm of the state and the country. We're building a lot of things, private 5G network, AI. We're doing a lot of projects like non-dairy milk, which will really bring fundamentally differentiated change and disruptive change to our country.